And this panic is in the hills of Uttarakhand because the entire town of Joshimath is sinking, and it is sinking very fast. More than 60 families have already abandoned the town. Another 29 families have been shifted to safer locations. Do you know what a sinking town looks like? Let me show you some pictures that have come to us from Joshimath. That's the beauty, by the way, of Joshimath. It's often called the gateway to the Himalayas. But take a look at pictures that have been coming to us in the last 48 to 72 hours. There are massive cracks that have started appearing in houses and resorts. There are cracks on the walls, ceilings, and floors as well. More than 560 houses have reported such cracks. For a moment, just imagine that this is your house and something like this is happening. Absolutely shocking. The locals say they are hearing strange sounds and noises coming from below the ground. And in some cases, water has been oozing out of these cracks. At least 3,000 people are likely to be affected by this phenomena. That's almost 15% of the entire population of Joshimath. These people have been asking the government to intervene for a long time now. But in the last few months, the situation has worsened. Last night, and those are pictures from there, the locals took out a flaming torch protest to highlight what is happening. Uttarakhand is a small hill state in any case, away from flashy news studios. Joshimath, even a smaller town there, doesn't get much attention. Chief Minister Pushkar Singh Dhami is now saying he's taken note of the incident. He says he will come and visit Joshimath and see what he can do. But what can he really do? Because if he had to do something, he would have done it by now. The problem is that Mr. Dhami and the state of Uttarakhand are 50 years too late on this problem. Joshimath is often called the gateway to the Himalayas. If you're traveling to Badrinath or Auli or the Valley of Flowers, you must pass through this pretty quaint little town. Because of its location, Joshimath has expanded in the last decades. You will find a lot more hotels, resorts, and businesses. But the problem is the geography of Joshimath does not permit this sort of development. The town is categorized as Zone 5, which is a high-risk seismic zone. It is prone to landslides and surface erosions. In fact, in 1976, a special panel had warned of these exact consequences. It was called the Mishra Committee report. According to this report, Joshimath is sitting on the debris of an ancient landslide. It has a maximum lifespan of 100 years. What's more, the report explicitly prohibited heavy construction work. It advised against removing rocks and boulders to build roads. But guess what the government did? Completely ignored this report. Successive governments, BJP and Congress, cashed in on Joshimath's popularity and went on a construction spree. And why just the government? Even locals in 1976 had blasted the Mishra Committee report. And 50 years later, the consequences are on your screens. The government has now created a special committee to find a solution. Experts from IIT, the Geological Survey of India, and the State Disaster Management Authority are brainstorming. They have recommended banning large-scale construction and halting hydroelectric projects. But as always, it is too little, too late. Let me go straight across to Atul Sati, who's convener of the Save Joshimath Committee. He's joining us on the broadcast. Atulji, thank you very much for being with us here. Let me quickly come to you and ask you this one simple question. The fact is that 50 years ago, we knew through various reports, etc., that this would happen in Joshimath. And yet, we are pretending as if this has come as a surprise. ये 2003 की दिसंबर महीने की 23 तारीख को हमने पहला ज्ञापन दिया था भारत के राष्ट्रपति को, जब ये परियोजना की सर्वे शुरू हो रही थी। और हमने तभी कह दिया था कि जोशीमठ के नीचे से अगर आप सुरंग बनाएंगे तो जोशीमठ शहर के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि 1976 में एक कमेटी, मिश्रा कमेटी ने कह दिया था कि जोशीमठ जो है एक भूस्खलन के ढेर पर खड़ा है और यहाँ अगर कोई भी भारी निर्माण कार्य होगा तो इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। और हमारे पास अनुभव था, जोशीमठ के ठीक सामने जयप्रकाश कंपनी ने एक विष्णु प्रयाग परियोजना बनाई
उसकी सुरंग में जब विस्फोट होते थे, पूरा जोशीमठ उससे हिल चुका था। तो हमने तभी ये हमारी आशंका थी कि अगर जोशीमठ के नीचे सुरंग बनेगी तो जोशीमठ के लिए खतरा होगा। उस समय से 2004 से लेकर के आज 2022 तक इस बात को हम लगातार दोहराते रहे हैं, कहते रहे हैं और 2010 में हम लोगों ने जब ये एनटीपीसी की सुरंग में सुराख हो गया और वहां से जो है 600 लीटर पर सेकंड पानी आने लगा और उनकी टीबीएम मशीन वहां फंस गई, तब एक फिर दोबारा से हमने बड़ा आंदोलन किया। पहले 4, 5, 6, 7 में बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का प्रभाव था कि उस समय सूबे के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी इस परियोजना का उद्घाटन करने जोशीमठ नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद 2010 में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद एनटीपीसी ने ये मानते हुए कि उनकी सुरंग से हमारे जल स्रोत सूख गए हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था के लिए पैसा दिया। और उस समय उन्होंने कहा था कि हम आपके घर मकानों का बीमा करेंगे, क्योंकि तभी हमारे घर मकानों पे दरारें आने लगी थी। लेकिन ये जो नई परिघटना है, जो नया फिनोमिना हुआ है, ये नवंबर 2021 से शुरू हुआ। जब कुछ घरों में दरारें आनी शुरू हुई, हाँ। हमने तभी सरकार को लिखा, कहा, प्रोटेस्ट किया कि आप जो है व्यापक सर्वेक्षण करा करके इसके कारणों की जांच कीजिए। लेकिन सरकार ने सुना नहीं। उसके बाद हमने जून महीने में स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक टीम को आमंत्रित किया, जो कि इस देश के प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, डॉक्टर रवि चोपड़ा। और हमने उनसे कहा कि आप सर्वेक्षण करके बताइए कि क्यों हो रहा है। उन्होंने हमको रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट हमने सरकार को सौंपी। उसके बाद सरकार ने अपने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के लिए उनकी टीम यहाँ भेजी अगस्त के महीने में और जी। उनकी भी रिपोर्ट सितंबर में आ गई। हम्म। उस समय से आज हम जो है 4 महीना हो गया, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं किया। और उसका परिणाम ये है कि स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई और अब ये हालत है कि 600 से ज्यादा घर इस चलिए। भूस्खलन, भू-धसाव के प्रभाव में हैं, घरों पे दरारें हैं, लोग जो है बहुत मुश्किल में हैं और बहुत सारे घर टूट चुके हैं। कई बड़े-बड़े होटल जो है धराशायी होने के कगार पर खड़े हैं। एक बड़ी आपदा जो है हमारे जोशीमठ में हमारे दरवाजे पर खड़ी है। और सरकार जो है किम कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है। चलिए। 1 जनवरी 2023 को नए साल के दिन हम मुख्यमंत्री जी के पास गए और हमने कहा कि हम 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, जोशीमठ आपदा की मुहाने पर खड़ा है, कृपया हमको सुनिए। मुख्यमंत्री हमको सुनने को तैयार नहीं हुए। 45 मिनट उन्होंने जो है 45 सेकंड हमको नहीं सुना, बैठने तक के लिए नहीं कहा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी हमारे क्षेत्र के विधायक थे, उनको बैठने के लिए नहीं कहा। तो ये जो है रवैया है सरकार का। और उसके बाद जो है जब ये हुआ तो जोशीमठ में लोगों ने कल की रात को इस ठंडी मौसम में, सर्दी की रात में और ठीक है। हजारों की संख्या में आकर के जो है मशाल जुलूस निकाला। और अभी मैं एक चक्का जाम से आ रहा हूं। लोगों ने आज पूरे दिन भर सड़क बंद रखी, बाजार बंद रखे, इस आक्रोश में कि मुख्यमंत्री ने यहाँ के लोगों का अपमान किया। यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनने के बजाय मुख्यमंत्री ने जो है उनको धुतकार करके अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। तो ये जो है सरकार की उदासीनता, सरकार का जो असंवेदनहीनता है, गैर गंभीरता है, अतुल जी, उसका आक्रोश है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अतुल जी, एक बड़ा अजीब फिनोमेना हो रहा है इस समय जोशीमठ में और इसकी वार्निंग हमारे पास बहुत पहले से आ गई थी। आप कह रहे हैं सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी अब तक। वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट। अतुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।